तो हाल फिलहाल कुछ हाल ऐसे है कि जो कोरोना केसेस वो फिर से बढ़ते जा रहे हैं और अपने जो हॉस्पिटल्स के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती जा रही है। और कई ऐसी न्यूज़ आ रही है कि जो घर पे ही मरीज़ मरते जा रहे हैं उनको ऑक्सीजन का सप्लाई बिल्कुल नहीं मिल रही, और हॉस्पिटल में कुछ लोग फिरते हैं और उनको ऑक्सीजन मिलती नहीं और उसके साथ में मर जाते हैं वो। तो यार इसको देखते हुए मैंने सोचा यार अपन अपनी खुद की ऑक्सीजन भी बना सकते हैं, जिससे आप एक घर पे मतलब एक टेम्परेरी सॉल्यूशन लगा सकते हो ऑक्सीजन का ऐसे मरीज के लिए। और अगर आपके आसपास कोई ऐसा हो कोई वृद्ध इंसान हो जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है या फिर कोरोना हो, तो आप उसके लिए सिस्टम बना सकते हैं। और इस सिस्टम के अंदर आपको कुछ भी बाहर से लेके आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस सिस्टम को मैंने अपने रिस्क पे बनाया, आप अपने रिस्क पे बनाइएगा। तो इस सिस्टम को कैसे बनाएंगे मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखते रहिए। तो उस चीज़ को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, तो एक बार आप यहाँ पे नज़र डालिए, आपको यहाँ पे कचरा वगैरह दिख रहा होगा, लेकिन वो जो चीज़ है वो अपन इनसे ही बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको एक कंटेनर चाहिए होगा जिसके अंदर अपना अपन सारा मटेरियल रख पाए जो भी अपन बनाने वाले हैं। तो उस कंटेनर के लिए आपको कोई भी आपकी पुरानी बाल्टी, कलर पेंट की डिब्बे की, या फिर कोई भी आपको अपने घर में जिससे नहाते हो आप वाली बाल्टी लेनी है। फिर उसके बाद अपने को क्या चाहिए, तो मेरे ख्याल से इस कोरोना काल में आपने पुराने सैनिटाइजर बहुत ज़्यादा ख़त्म किए होंगे और आपके पास कुछ ऐसे फालतू डिब्बे तो पड़े होंगे कोरोना के, ये सैनिटाइजर आते हैं इसके अंदर, तो ये डिब्बे तो आपके पास होंगे। आपको ये चाहिए। तो उसके अलावा आपको ऐसे कुछ नट बोल्ट चाहिए जिसके ऊपर वायर बंधे हुए हो, जैसा कि आप देख सकते हैं एक रेड कलर का वायर और एक नेगेटिव वायर। मैं आपको इनकी प्रोसेस बनाने की अभी दिखाने वाला हूँ, तो आप देखिए कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, ऐसे एक नट बोल्ट लेने हैं लंबे से और इसके अंदर कुछ स्क्रू होंगे, इसके ऊपर अपना वायर इसके ऊपर कस देना है। और फिर उसके बाद यहाँ पे इनके जो बोल्ट होते हैं यहाँ पे इनको अच्छे से टाइट कर देना ताकि इनका जो कनेक्शन हो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से। और उसके अलावा आपको एक ऐसे कास्टिक सोडा चाहिए, ये है फुल चाप कास्टिक सोडा, मतलब आप कांटे छाप भी ला सकते हो कास्टिक सोडा। कोई भी आपको कास्टिक सोडा चाहिए या आपके आसपास की कोई भी परचूनी की दुकान पे मिल जाएगा। बस आपका सारा काम खत्म हो चुका है, लो इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अपन क्या करने वाले, ये जो अपना सैनिटाइजर का डिब्बा है अपन इसको इस बाल्टी में डालने वाले हैं और इसके पीछे अपने को कुछ खड्डे करना है ताकि बाल्टी के अंदर जो पानी हो वो इस सैनिटाइजर के डिब्बे के अंदर नीचे से चला जाए और ये सैनिटाइजर का डिब्बा इस पानी के साथ मतलब इक्विलिब्रियम में हो, मतलब इस जितना बाल्टी के अंदर पानी हो उतना ही इस डब्बे के अंदर पानी। तो ऐसे कुछ आपको इसके नीचे से खड्डे करने हैं। तो आपको मतलब कुछ इस टाइप से खड्डा कर देना ताकि जो भी पानी है वो इसके अंदर आराम से चला जाए। तो ऐसा कुछ अपना सिस्टम बन चुका है जैसा कि आप देख सकते हैं। और अपने को इस पॉइंट पे यहाँ पे एक और खड्डा करना पड़ेगा ताकि जो अपना वायर है वो इसके अंदर से चला जाए। तो यहाँ पे अपन एक और खड्डा करने वाले हैं। अब क्योंकि ये जो अपना डिब्बा है इसके अंदर से ऑक्सीजन निकलेगी और ऑक्सीजन को अपने को पॉजिटिव कनेक्शन देना पड़ेगा। तो पॉजिटिव वाले वायर को मैं इसके अंदर यहाँ से घुसा रहा हूँ जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये करीब यहाँ पे आप देखें तो आपको यहाँ पे परछाई दिख रही होगी, तो अपन को करीब इसको यहाँ तक लेके आना है, इसको नीचे तक छोड़ देना है यहाँ पे। तो अब यहाँ से अपनी ऑक्सीजन निकलेगी। तो मैं आपको यहाँ पे कहूँगा कि आप यहाँ पे हॉट ग्लू का यूज़ कर सकते हैं इसको सील करने के लिए, लेकिन अब आप कहेंगे यार लॉकडाउन के अंदर मैं हॉट ग्लू नहीं लेके आ सकता, फिर मैं कहूँगा यहाँ पे एक और स्कीम है, कुछ करो। तो आपको क्या करना है, आपको कोई भी प्लास्टिक का डब्बा लेना है, फिर कोई भी प्लास्टिक की बोतल आपके पास होगी तो आपको उसको यहाँ पे पिघला के इसके ऊपर लगा देना है। ये काफ़ी अच्छा तरीका है इसको सील करने का। तो मेरे पास हालांकि हॉट ग्लू पड़ी है, लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों के पास हॉट ग्लू नहीं होगी, तो मैं आपको इसको दूसरे तरीके से सील करना सिखाता हूँ। तो आइए अपन इसको दूसरे तरीके से सील करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ प्लास्टिक है, तो अपन इसको यहाँ पे पिघला देंगे। आप गैस बनाना है फिर गैस के ऊपर भी पिघला सकते हैं इसको। और ये पूरी पिघल जानी चाहिए एकदम पूरा लिक्विड फॉर्म में हो जाना चाहिए जैसा कि आप देख सकते हैं। तो आपने देखा कि अपन ने इसके अंदर वायर तो डाल दिया अच्छी तरीके से और यहाँ पे पूरा ठोस हो चुका है। जैसे आप देखें यहाँ पे हिल भी नहीं रहा वायर, एकदम हॉट ग्लू का काम करेगा अगर आपके पास हॉट ग्लू नहीं हो तो। फिर उसके बाद जैसा कि मैंने कहा आपको इसके अंदर से ऑक्सीजन निकलेगी, तो ऑक्सीजन निकलने के लिए आपको सबसे पहले तो ऐसा एक पाइप चाहिए होगा, या आपके कोई भी घर में मिल जाएगा, आपको आराम से पाइप मिल जाएगा। मैंने इसको काटा है। फिर ये एक ढक्कन होता है इसका डिब्बे का, तो अपने को जैसे ढक्कन लगाए तो यहाँ से जैसे ऑक्सीजन निकलेगी यहाँ पे पाइप फिट करना पड़ेगा। तो आइए यार इसके लिए खड्डा कर लेते हैं ढक्कन के अंदर इस पाइप के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे एक छोटा सा रफ सा खड्डा हो चुका है और अब अपने का यहाँ पे पाइप फिट भी आ रहा है। तो अब यहाँ पे अपने को इसको सील करना पड़ेगा। तो मैं कहूँगा आप हॉट ग्लू भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन अपना जो पुराना मेथड है प्लास्टिक को गर्म करके यहाँ पे चिपकाना, आप वो भी बड़े आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो अपन अब इस बाल्टी के अंदर पानी भरेंगे। मेरे ख्याल से इतना पानी काफ़ी होगा अपने एक्सपेरिमेंट को करने के लिए।
तो अब अपन क्या करने वाले हैं, अपन यहाँ पे अपना कास्टिक सोडा मिलाएंगे इसके अंदर। इसको मिलाते वक्त आपको ध्यान रखना है आपके हाथ पे नहीं लग जाए। तो यहाँ पे मैं इस पानी के अंदर पूरा कास्टिक सोडा मिला दिया और उसको मिलाएंगे। यहाँ पे अपना NaOH यानी कैस्टिक सोडा डल चुका है। कैस्टिक सोडा का फॉर्मूला होता है NaOH, इसके अंदर एक H होता है और एक O होता है, और पानी के अंदर क्या होता है H2O यानी एक O। तो NaOH का मिलके एक O NaOH से निकलेगा और एक O H2O से निकलेगा, ये दोनों मिलके O2 बनाएंगे जिससे अपनी ऑक्सीजन गैस निकलेगी। तो अपन अब क्या करने वाले हैं, यहाँ पे जो ये है इसका वो इसको यहाँ पे डाल देंगे। अपन ने जो खड्डा करा है वो यहाँ पे इसका पानी यहाँ पे बराबर होने के लिए करा है, जिससे कि इसका इस डब्बे का पानी और इस बाल्टी का पानी यहाँ पे इक्वल हो जाए। यहाँ पे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस डब्बे के अंदर भी एकदम इक्वल का पानी आ चुका है। जैसे कि आपको मालूम है यहाँ पे अपना पॉजिटिव वायर तो यहाँ से कनेक्ट हो रखा है, फिर अपने को यहाँ पे अपना नेगेटिव वायर जो नेगेटिव बोल्ट है वो अपन यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। और अगर अपन इसको आप ये जो तो यहाँ पे जो दोनों वायर निकले नेगेटिव और पॉजिटिव, आप इसको किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। आप अपनी कार की बैटरी से कनेक्ट कर सकते हैं। फिर आप कहेंगे राहुल मेरे पास कार नहीं है, तो आप अपने एक 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर सकते हैं। फिर आप कहेंगे राहुल मेरे पास वो भी नहीं है, तो जो आपके टीवी पे D2H होता है उसके अंदर जो एक वो होता है ना अडेप्टर 12 वोल्ट का, आप वो भी लगा सकते हैं। बस आपको पॉजिटिव और नेगेटिव का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमारे पास दो वायर है पॉजिटिव और नेगेटिव, वो मेरी बैटरी है यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरी बैटरी है, ये 12 वोल्ट की बैटरी है। तो अपन इसको कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पे। तो मैं सबसे पहले आपको इसका करंट दिखाऊंगा, इसकी सर्किट के अंदर करंट कितना दौड़ रहा है। तो मैं आप पे इसका कनेक्शन इस मल्टीमीटर से करने वाला हूँ ताकि आपको मालूम पड़े कि इसके अंदर करंट कितना दौड़ रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं अपन अपनी 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करने वाले हैं। तो आप यहाँ पे करंट देख सकते हैं, यहाँ पे करंट कितना दौड़ रहा है। यहाँ पे 1.5 एम्पियर यहाँ पे करंट दौड़ रहा है। और यहाँ पे आपको बबूले बनते हुए भी दिख रहे होंगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको बबूले बनते हुए दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे जो गैस निकल रही है आसपास में वो है हाइड्रोजन गैस, और जो इस डब्बे के अंदर से निकल रही है वो निकल रही है अपने ऑक्सीजन गैस। हमने जो इसका बनाया था इसका ये अडेप्टर, इसको अपन लगाते हैं यहाँ। तो अगर मैं इससे सांस लेने की कोशिश करूँ, क्योंकि मेरे को मालूम है इससे ऑक्सीजन निकल रही है, तो यहाँ से पूरी 100% यहाँ से ऑक्सीजन निकल रही है। जैसे कि आपने देखा मैं इससे पूरी तरीके से सांस ले सकता हूँ। और अगर आप यहाँ पे आके देखें तो अपनी जो बैटरी है वहाँ से इधर से करंट भी निकल रहा है। इधर आके दिखाइए कैमरा में। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो इसके अंदर 1 एम्पियर करंट जा रहा है इस सर्किट के अंदर पूरे के अंदर, और 1 एम्पियर से यहाँ पे अपना पूरा करंट आ रहा है। और अगर आपको इसकी ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाना है तो आप क्या कर सकते हैं, या तो आप 24 वोल्ट की बैटरी ले सकते हैं, जिससे आपको जो करंट पूरा डबल हो जाएगा और इससे एकदम प्योर ऑक्सीजन निकल रही है। तो यहाँ पे हमारे कैमरामैन ने कहा कि उनको भी सूंघनी है ऑक्सीजन। तो ये लीजिए कैमरामैन आशीष, देखिए। क्या हुआ, ऑक्सीजन आ रही है इसके अंदर से? हाँ, अगर आप इसको ऑक्सीजन को ले, अगर आपके घर में किसी को भी कोरोना है या फिर उनको ऑक्सीजन की सख्त ज़रूरत हो और एम्बुलेंस के आने के अंदर टाइम लगता है, तो आप ये एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं। और अगर आपके आसपास के पड़ोस में भी ऐसा कोई आपको आदमी दिखता है जिसके ऐसी दिक्कत है, तो आप उसके लिए सिस्टम बना के दे सकते हैं। तो यहाँ से इसकी प्योर ऑक्सीजन निकल रही है। ऑक्सीजन जो अपने को पॉजिटिव साइड के ऊपर मिलती है। तो ये जो ऑक्सीजन है प्योर ऑक्सीजन है, आप इसको आराम से इसको सीख सकते हैं। तो यह हमारा यहाँ पे एक सिस्टम बन के तैयार हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसको आप अपने घर पे बना सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा काम का आएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। लेकिन एक मिनट, अब आप पूछेंगे इसके पाइप से थोड़ी लेंगे। तो जैसे वो लगता है ना मेडिकल वाला मास्क, प्लास्टिक के अंदर खड्डे होते हैं, तो आपने N95 मास्क तो देखा ही होगा। आप उसके अंदर एक खड्डा करके इस पाइप को लगा सकते हैं और फिर इसको आराम से इनहेल कर सकते हैं ऑक्सीजन को। It is relatively easy to build a general purpose oxygen generator. It can be used to feed small torches as well as other jobs in the house workshop. This generator should be installed in a backyard outside the house to provide an exhaust for hydrogen gas, which we will not use and is highly flammable.
You don't need to go shopping for hard to find or expensive components at all. To begin with, you need a piece of PVC pipe, about 4-inch diameter and about 10 inches long. These sizes are not critical and largely depend on the size of the rest of the components you'll be using. Then you need a transparent plastic box with an airtight cover, similar to boxes used to store packages in the cupboard. Another material you'll need is a PVC reducer coupling to fit the PVC to a thin, transparent type hose with 1/4 inch inside diameter. In order to hook the hose, use a plastic barb fitting of the proper diameter, screwed or glued to the PVC pipe adapter. This hose will carry the oxygen into the room or area where it is going to be used. A small PVC ball valve must be placed at the free end of the hose in order to control oxygen flow. You also have to get yourself a PVC swamp cooler float. Also, you need 2 pieces of insulated 10-gauge copper wire in 2 colors. One length is red and the other is black. We'll also use a pair of 10-inch long stainless steel screws. Each of the screws will carry a pair of nuts for attaching it to the copper wire. We are going to need a small transformer for stepping the line voltage down to about 24 volts and a 3 amp 600 volt diode bridge. Let's first look at the assembly of the oxygen producing cell. First, the adapter must be attached to one end of the PVC pipe. It must be perfectly sealed without any leaks. Next, strip the insulation off the red wire so it can be curled as an eyelet. This eyelet should snugly fit on one end of the stainless steel screws and kept in place by the 2 nuts. You must cover the copper wire with some waterproof sealant so it does not touch the electrolyte. Then fasten the screw to the inside of the PVC tube with a plastic strip so that the water inside the PVC pipe can be pushed down by the oxygen produced, but preventing the oxygen gas from escaping outside the PVC pipe. Next, the PVC tube adapter should be attached to the lid of the box near one of its ends by means of the plastic barb fitting by using rubber gaskets to prevent any leakage. Please check the PVC oxygen generating cell has enough space to be suspended an inch away from the bottom of the box. If necessary, the PVC pipe can be slightly trimmed in order to meet this condition. The assembled set should look like this drawing. At this time, the cell is ready to generate the oxygen, but it's necessary to add an output for hydrogen, a gas also generated in this process. The black cable must be attached to the remaining stainless steel screw by using this other screw and its pair of nuts and waterproof sealant. This screw can be suspended by attaching the black wire to the lid of the box. This screw should be completely covered by the electrolyte at all times. At the right end of the box, a hole is made so as to fit a 1-inch diameter PVC pipe. This pipe should be about 6 feet long in order to provide an exhaust for the hydrogen to the outdoor air. An elbow arrangement is placed at the top end of this pipe to prevent rainwater from entering. You also had to make a hole in one side of the box to install a swamp cooler float connected to a cold water pipe through a piece of thin hose. The box lid and all gas and water fitting must be perfectly sealed and free from leaks. The next step is to dissolve about 1 ounce of sodium hydroxide, NaOH, in a large glass of water and then empty it into the plastic box. Now you must open the valve filling the float so that the box is filled to the necessary level as shown in the drawing. The oxygen outlet valve must also be opened to allow air to escape from the oxygen generating cell and have the stainless steel screw inside the PVC pipe covered by the water. Next,
comes the electrical connection. The transformer and the diode bridge are used as the power supply. The connections are very simple as seen in the drawing. The ends of the transformer secondary winding go to the diode bridge at its AC input, and then the positive terminal of the diode bridge goes to the red wire of the oxygen generating cell, and the negative terminal of the bridge goes to the black wire from the hydrogen generating screw. The transformer primary goes, as usual, to a regular outlet, either 127 or 220 volts AC, depending on your country. If the plastic box is transparent, bubbles should be seen to come off the hydrogen generating stainless steel screw. The bubbles should be abundant and must form a cloud around the screw and begin to rise and burst on the surface of the water. These bubbles are hydrogen gas that, being lighter than air, goes out to the free outdoor air through the pipe we have installed. Likewise, oxygen bubbles are also being produced inside the generator cell around the oxygen generating screw. This gas is oxygen, which must be coming out of the hose going out from the cell and into the house. If we leave this valve open, oxygen will continue to flow as long as the water covers both stainless steel screws. Since we are extracting oxygen and hydrogen from the water, the level of water will slowly decrease, but the float valve will keep it constant. On the other hand, if we shut off the oxygen outlet valve, the pressure inside the cell will begin to raise, which will cause the water level inside the cell to drop, thus decreasing the area of the screw covered by the water, thus reducing the amount of oxygen produced. If the water level drops low enough, the reaction stops. If once again we need more oxygen gas, we simply open the valve, the oxygen stored in the cell begins to come out from the cell, the water level goes up, water covers the screw, and the reaction starts again. This means we will have a machine which can produce oxygen continuously as long as it has a constant source of water and an electrical power supply. Please keep in mind that the hydrogen generating screw must be completely covered by water at all times. Whenever the oxygen outlet valve is shut off, the water level in the box goes slightly up, so there should be plenty of room for water to flow out of the oxygen generating cell to stop the electrolytic reaction when needed. None of the values or dimensions given are absolute. For instance, you can use more than one stainless screw per electrode for more contact surface and more oxygen gas produced. The voltage supply to the electrolytic cell can also be higher. On the other hand, a large box and a larger oxygen generating cell can be used. The principle will remain the same. A word of caution. Both hydrogen and oxygen can be very dangerous and cause explosions or fires if not handled properly. A room full of oxygen can lead to the ignition of some flammable materials. Since pure oxygen enhances combustion of most materials, it can even make certain metals catch fire. Furthermore, hydrogen gas is highly flammable and can pose a risk of fire or explosion. When handling any of these gases, be sure to avoid being near open sparks or flames. I hope this information has been helpful to you. Thanks for watching and please subscribe to my channel. Chava Tarin.